Mr. Avinash Teeluck is the Minister of Culture and Art in Mauritius, and he has ancestry from Bihar. And he is with us. Mr. Teeluck, how do you feel when you come here for Pravasi Bharatiya Divas celebration? Well, we feel very proud and privileged to be part of this grand conference which calls back to India all the diaspora. And Mauritius is I would consider one of the countries having the largest diaspora population, given that the majority of the population have ancestors coming from Bihar, from certain parts of India, and more than nearly 200 years back, they were shipped from India to Mauritius to work as mazdoor, girmitiya mazdoor jaise bolte hain. So they were there, and we have toiled the soil, we have worked hard, and finally today those descent of girmitiyas are ruling the country. And now you are the minister. And I'm a minister, a cabinet minister, similar to the Prime Minister, who is also a descent of the Girmitiya Mazdoor. And actually our Prime Minister previously was the chief guest of the Pravasi Divas in 2019. Bihar, where your ancestor from? Any idea? Well, there is a mechanism in Mauritius for you to go and go back to your origin. I haven't myself done it, but I know many Mauritians have already conducted this search and gone back to Bihar and certain parts and to see where they come from. So how do you feel, how the Mauritian feel when they know that India is fast developing country, India is the largest democracy in the world and a stable governance? So how you feel about it? We feel proud because we share the same political philosophy as India. So whatever achievement is coming the way of India, Mauritius somehow, we aspire to follow the footsteps of this great nation, which is the biggest democracy, which is growing economy, chairing the G20, so sitting on the table of major big powers, world powers. So Mauritius looks up to countries like India, especially when we form part of the diaspora. So we look up to India and to India's progress. You were participating in the art and culture session of Pravasi Bharatiya Divas. So what is your suggestion? How do you need to strengthen the art and culture connection more, or it is already connected well? We already since several years have a cultural exchange program with India, which allows the sharing and the sharing of information, but also of know-how and experience with artists from India and Mauritius. We are only today strengthening this relationship because it's always beneficial for Mauritius to benefit from all the know-how, the experience, the great talent that India has to offer. And that would be, of course, on the basis of this cultural exchange program, which already exists. I think Mauritius is also hosting the headquarters of Hindi, World Hindi Conference. So what are you doing in that? The World Hindi Secretariat is based in Mauritius. So this can illustrate how Hindi has a very significant place in Mauritius as well. So we are working closely with India in the promotion of the Hindi language and the promotion. At the local level, at regional level in Mauritius, we already have a Hindi-speaking union. So there are certain measures, certain actions being taken for years now to promote India, but also to promote Hindi, but also to get Hindi to every nook and corner. अपने घर में आप हिंदी में बात करते हैं या आपकी लैंग्वेज कुछ दूसरी? पढ़ते हैं क्योंकि स्कूल में सिखाते हैं हिंदी, पर आई एम नॉट दैट फ्लुएंट, तो बोल लेता हूँ थोड़ा सा, पर आती है, समझ आती है. घर की भाषा क्या है आपकी? घर की भाषा क्रियोली है. दिस इज अ ब्रोकन फ्रेंच. और आपकी पत्नी भी है आपके साथ, वो भी आई हैं. आप किस तरीके से भारत और मॉरिशस की संस्कृति को बचा के रखती हैं अपने घर में? वैसे तो हमें कहना पड़ेगा कि मॉरिशस में बहुत से परिवार हैं, हिंदू परिवार, प्रवासी भारतीय लोग जो भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से बरकरार रख रहे हैं. केवल घर पर कुछ लोग तो भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और पढ़ते भी हैं. हमारे स्कूलों में विश्वविद्यालय तक हिंदी पढ़ाई जाती है और हमारे जो लोकल चैनल्स हैं उन पर बहुत से हिंदी कार्यक्रम भी आते हैं. तो इन सभी फैसिलिटीज़ के द्वारा लोग हिंदी के साथ एक क्लोज संबंध रखते हैं.
तो जब भाषा की बात करते हैं तो संस्कृति भी इसमें आ जाती है। तो भाषा को प्रिजर्व करेंगे तो संस्कृति ऑटोमेटिकली प्रिजर्व्ड होगा। तो हमारी ओर से हम यही प्रयास करते हैं अपने बच्चों को ये सिखाने के लिए, अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए, और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेने में हम पूरा योगदान देते हैं, एनकरेज। आपके पूर्वज भी बिहार के ही थे? जी, बिहार से ही आए हुए। बिहार का खाना, बिहार का पीना, कुछ गाना वगैरह आपके पास है? ये खाना वाना घर में बिहार का बनता है या नहीं? वैसे तो मॉरिशस में एक मिक्स्ड कल्चर है, क्योंकि हम भारत से प्रभावित होकर जो फूड स्टफ्स हैं, खाना है, हम अपने घर में पकाते हैं, लेकिन शायद ठीक उसी प्रकार से नहीं जिस तरह से भारत में बनाते हैं। तो थोड़ा मॉरिशन और इंडियन का मिक्स्ड कल्चर है। तो शुद्ध भारत फूड केवल वो तो इंडिया में ही आता है। मॉरिशस में आएंगे, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन भारत का खाना भारत का खाना है। तो हम इतना कह सकते हैं कि बिहार के गौरव हैं आप दोनों, जो मॉरिशस में मंत्री हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो निश्चित तौर पे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जब ये आते हैं, एंड व्हेन दे कम हियर, एंड वी आल्सो फील प्राउड दैट यस, आवर पीपल आर देयर रूलिंग द कंट्री वेयर दे हैड गन एज ए लेबर।